streaming. अक्षय सर ते आवाज कमी आला रे, कशामुळे ते सर म्यूट समोर करा बोलल्यानंतर बी कमी येत आहे, हे पण कमी येत आहे, त्याचं काय कारण आहे का? Good evening, one and all. Padmasali Shikshan Samstha's AR Burla Women's College has been organizing 30 days online certificate course on basics of research and academic integrity. And this is 21st day of this certificate course. It is on this occasion we have gracious presence of Honorable Dr. G. Syamala ma'am, Principal Dr. Rajendra Shendage sir, Coordinator of IQAC, Dr. Shirish Bhosale sir, all the dignitaries on this online platform and research scholars. First of all, it is on the behalf of IQAC Internal Quality Assurance Cell and Research Promotion Committee, and with my warm-hearted feelings, I welcome to you here. It is on the online platform. Today's resource person, Honorable G. Syamala ma'am, is going to guide us on the topic entitled How to Design Questionnaire for the Research or a Data Collection. And it is very essential to frame questionnaire for the research. And we understand the art of framing the questionnaire from the data collection today. So it is a privilege to introduce her. Dr. C. G. Syamala ma'am is presently working as an associate professor in Department of Commerce, Savitribai, Phule, Pune University, Pune. She is associated with the Department for past 15 years, and prior to the department, she has a teaching experience in the college like VMCC, St. Miraj College, D.Y. Patil, Pune. She has also worked for reputed colleges like St. Anne's and Nizam's College in Hyderabad. Besides being fun-loving and even energetic, she enjoys working with young students, like to create an inspiring and even enjoyable teaching learning experience for herself and for students. And she finds interest in research and has completed the 2 minor and 2 major research projects from funding agencies like UGC. One of her research projects was funded by Indian Council of Social Science Research, New Delhi. She is a registered research guide in a SPPU, in the sense Savitribai Phule, Pune University, and has 3 students working under her guidance. And she has completed her MPhil post-graduation and bachelor's from BMCC Pune. She has coordinated a number of activities in the department and hosted conference at university level. She has also participated and even presented paper in various conferences. And she was also a winner of Avishkar competition held in Amravati. She believes in the mantra of hard work and determination brings success. Once again, with my warm-hearted feelings, I welcome Dr. G. Syamala ma'am, and I request her to proceed this session. Over to you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much. It's like I'm having a huge problem with my internet connection. But yeah, sometimes this works on online mode. So nevertheless, now not waste more time over it. And I'll start with my thing. Unfortunately, I'm not able to share my presentation with you. But yeah, I would like to tell you in the things in such a way that I hope you will connect with me and try and understand what this questionnaire is. The topic, thanks to the authorities for calling me, and the topic given to me today is designing a questionnaire. One of the most important element or a step which can not be avoided and which is very essential when you're doing your research work. Especially this step is very important for students of social science, students from commerce, management, business, and I'm sure to a larger extent this is also very useful for the students who are from probably the science background and who are trying to collect some information from the respondents from where they need to collect the data from.
So what is this questionnaire and how is this questionnaire to be built? Unfortunately, today I don't think this PowerPoint will ever work and I'll be able to share with you, but I had made a beautiful PowerPoint with a lot of detailings. So I just start over those things and try to talk about it. So the point here is, when does a questionnaire come into picture? And what is supposed to be thought about when a questionnaire starts? First and very important thing that you need to know about the flow chart and the designing. The first thing is that you should be clear with your research questions. From these research questions, what objectives you have derived, and from these objectives, what hypothesis has come to you, and more. And obviously, you have derived your hypothesis with the variables you have decided, because variables are something which are very, very important, and those variables are which are going to be tested in your through your research work. So all this has to be kept in front of you, have to be there in front of you, so that it becomes very easy for you to actually start knowing as to what should I ask, what is the information I need to collect. And obviously you will know from whom are you collecting the information. So we have a lot of segregations into this questionnaire, because sometimes you might have questionnaires, sometimes you might have a very planned and a drafted questionnaire. Sometimes you might just have an interview which might not have been planned. So this all goes with what research design you have. But obviously you must have decided about all this, because whenever you start doing your questionnaire, you will need to know about your variables very fine, because whatever you're going to test. So the most important thing is, what is the information are you going to collect? And how is the instrument? So questionnaire is one of the instruments for collecting the information. So you should be very clear that what information needs to be collected, and this obviously is clearly shown from your research objectives, because that is objectives from where you're going to conduct your research work. So the flow chart goes by that you need to know your research objectives very clear, you need to know your hypothesis very clear, you need to have a clear understanding as to what information I need to collect. Then you need to know that how will I collect, means what kind of questions will I use? Will I use an open-ended question? Will I use a close-ended question? Will I use a dichotomous question? Will I use a multiple choice question? Will I use a Likert scale question? All this type. So what type of question do I need to use? And then, believe me, drafting a questionnaire is no joke. Even the experienced and the experienced guy takes some time to know, sit back, do the questions, revise it back, again examine, go back to the objectives, think about the variables, think about the hypothesis, and again sit back and do it. Like a learned man once said, I was just going through some of the PowerPoints like I usually do in my free time, so something on research. And one of the IIT professor, he was talking about his experiences over research, and he was saying that it sometimes took him 17 times to revise the questionnaire and get back to the exact questionnaire, because this questionnaire is an instrument. This is an instrument which needs to be done absolutely foolproof correct. Because if you make a mistake in asking a wrong question, if you don't put the question in the language it is supposed to be used for, if you put the question in such a way which gives two meanings, it becomes very difficult for you to collect the data in a writer's spirit. So in case if you have to get the data in a writer's spirit, you need to draft your questionnaire, which needs an very good planning and for a long period of time. So there are a lot of revisions and coming back, again checking whether the question is getting repeated, whether it fits your objective, whether it fits your variables, whether it fits your hypothesis, and revise it. So you have the research objectives, you have the hypothesis, you know what information needs to be collected. You also need to understand what type of questions you need to ask. You have to draft your first questionnaire, re-examine it, revise it, then pre-test it,
pilot test it, use it on some people. Suppose your respondents are maybe, students, just try, go over and test over it. So pre-tested, pilot tested, see whether it's working, see whether the questions in that are valid, see whether the questions are reliable for you to collect the information, and then you create a final draft. This draft will be your final instrument, which will be called as a questionnaire, which is one of the most important instruments to be used for your research work, for collecting your data, depending upon what research design are you using. So any quantitative research, even in case of a qualitative research, in case if you need to take up an interview, maybe sometimes it will be a unstructured interview at the spur of the moment. Maybe you have to do the and collect the information talking about it. You need to have some questions. Even in case of an qualitative data, this instrument of knowing the right question is very important. So this is the flow chart of designing a questionnaire. So now going back to the next, over to my slide, unfortunately, which I'm not able to show you, that one very important thing a researcher should keep in mind, and these are called as an techniques of designing a good questionnaire, and that is that whenever you ask a question or whatever questions you need to ask, they should be logically and sequentially presented. Though I had actually one of the slides, I have taken it from one of the books. The courtesy is Research Methodology by Dr. L.S. Gupta. In that book, I had a very nice questionnaire to share actually. And I was going to show you how module that question is, how subsections that questionnaire has, and how logically this presentation of questionnaire takes place. Nevertheless, I'll try my best to put it in my words in the way it is. So these are the techniques. So whenever you start doing any good, a good research or good questionnaire should always have a logical sequencing of questions. Second very important thing is it should be rightly worded. Lightly worded means you have to use the words in a very appropriate manner. You cannot use the words in a wrong manner. So when you say that your opinion has to be clearly put there, or you cannot rank and create an opinion. Opinions are different, ranks are different. Suppose a mobile has to be ranked, so you have to be very clear. Rank the mobile on the scale of 1 to 5, or then say, what is your opinion about using a mobile? Are you getting me? So you cannot mix two questions. You have to be very clear with your wordings, with your grammar, with your questions of what you need to ask for. And a very important thing that it should have a very clear layout. So normally when you start building a questionnaire, it is like initially you should give an introduction about who you are, what are you doing, and what is the purpose of this research work, and what is your intention as a researcher in getting this information through the questionnaire. That comes in an explanation on the top of it. And then you have to ask them that and tell them that your questions or your data, whatever is collected, is going to be secured, well secured. It will not be manipulated. It will be used only for the research work, and it will be kept purely confidential. Now you said that you're doing something on ethics. This is an ethics committee. One of the very important thing about the ethical thing is that whatever, suppose Manisha has given me some response, I cannot violate with Manisha's response using it for some other research. I have to use it only for the research which I'm asking the questions for. So a very clear layout about introducing what you are, who you are, the purpose of the research, telling the respondent that his information will be kept confidential, and also saying that this particular research is for the academic purpose. Then you start your sections of research. And then one by one, your sections of research start. So initially, you could just ask a general question, and then some segregations of that, which will come to a little later part. So, and always,
A questionnaire cannot be a short thing. जैसे हम एमकॉम के बच्चों को देते हैं, जैसे अरे भाई when आते हैं बच्चे करने को, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग ना ज्यादा सीरियस इस पे मत लो, ये प्रैक्टिस सेशन है. सो प्रैक्टिस सेशन में आप भले ही 10 क्वेश्चन निकालो पर इंफॉर्मेशन निकालो, वो उनके लिए अलग है. बट अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको एक कन्फाइंड वे में, एक मेथोडोलॉजिकल वे में, एक एकदम फुल प्रूफ कंपाइल्ड वे में आपको क्वेश्चनर बनाना पड़ता है. कहीं कहीं बार वो क्वेश्चनर को बुकलेट की तरह भी तुम यूज कर सकते हो, होता है. बिकॉज ये ऐसा नहीं है और ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अरे मैंने 50 क्वेश्चन पूछे मेरे क्वेश्चनर में. ये ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन पूछे पर वो क्वेश्चन में से अगर कोई ठीक से डेटा ही कलेक्ट नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो कोई सेंस नहीं है ना. सो ऐसा है कि जो क्वेश्चनर है वो क्वेश्चनर को करेक्ट सब्जेक्टिव मैनर में सब टॉपिक्स में प्रेजेंट करके उसका अगर हर सब टॉपिक में अगर हमने 5 भी क्वेश्चंस पूछे बट एकदम रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे तो बेस्ट है. सो अगर आप मेरे को ये क्वेश्चन पूछोगे मैडम मैं 10 क्वेश्चन करूं इनफ है, मैं 20 क्वेश्चन करूं इनफ है, ऐसा नहीं है. वो क्वेश्चंस कवर होने चाहिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स से डिराइव हो रहे हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स कवर कर रहे हैं. दैट मीन्स यू हैव अ फुल प्रूफ क्वेश्चन. सो मैंने एक स्लाइड बनाया था जिसमें आई हैड टॉक्ड अबाउट स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग अ क्वेश्चनर. और ये स्टेप्स मैंने ABCD और मेरा पूरा प्रेजेंटेशन वो ABCD पे था. तो अभी जैसे आप देख नहीं पा रहे हो पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमेशा याद रखिए क्वेश्चनर करते समय कि तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, कन्वर्ट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इनटू इंफॉर्मेशन नीडेड. सिट बैक, थिंक तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है. अच्छा मेरा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट whether the customer was happy or not. So happy के related जो भी questions है वो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए. और is he satisfied with the training program, satisfaction के related के जो भी questions है वो तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए. Very important. So हमेशा research objectives से dependent ही questionnaire होनी चाहिए. Okay, वो one of the most important step involved. So you have your research objectives because these research objectives are finally going to be converted in the form of a question which is going to be given to the respondent, and the respondent then is going to give you an answer which is going to be used for your research work. So very important that you should ask a right question. So the next important thing is that how would you use this questionnaire? So now that we are online, so mostly we can use Google Forms as a questionnaire. So Google Form has got a huge network. We are not into the Google Form thing, but I'm sure half of you must have used and know about what Google Form is, and one of the well-built one, and you can do it. Now, ऐसा है जब मैं PhD कर रही थी तभी Google Form was not much in use. We used a questionnaire which was actually done. I did it on an Excel. First I did it on Word. Then somebody told me, no, for ticking, it's better you do it on Excel. But then I had to take a printout of it and then go and collect information. So nowadays, how are you administering the questionnaire is also very, very important. So you have to know whether you're using it online. So your questionnaire should be such that online respondents should be able to connect with you and give an answer. So because many a times I can, even in the online system, now that most of you are using Google Forms, because what happens is you can just convert the Google Forms and transpose into the Excel sheet and you get all the data. But then there are certain times like where you cannot collect information through that. You have to personally go, meet them, ask them face to face, and then do it. So there are ways of administering the questionnaire. You should be able to know कि ये questionnaire को administration ऐसे करने से better होगा या मैं face to face लूं, depends upon what your research work demands for. So it could be face to face, it could be that you ask a question and you fill the questionnaire by yourself, or then it is through a computerized form. So whatever be the thing. Next very important thing is when you start writing a questionnaire, never forget your objectives, which I've told you
several times now, but also remember your variables, what you have lifted for study, because your variables have to be reflected through the questions you are asking in your questionnaire. If you divert with your variable, suppose if your variable is about performance, so your and performance into marks, into grades, yeah, into getting a better job. So all these are your variables. So you should be using these variables when you are drafting your questionnaire. So that is also very important and one should know it. So now the next important thing is, so after understanding that objectives are important, after understanding that the variables what you have lifted is very essential, you need to know it. You also need to know which scale are you using. Are you using a nominal scale? Are you using a ordinal scale or ratio scale? Do you need to know the difference? Now the thing is, many a times we ask your income group. So income group can go into the nominal scale also and can go into the ordinal scale also. So very important for you to understand which scale and measurement am I using. Am I comparing between two? Am I just taking a factual information from somebody? So whenever you're converting the research objectives into the information areas, it is very important that you understand your objectives very clear, so that you can remove a right question. You also understand what are the variables needed for your study, and you also understand what scale are you using. Are you using the ordinal scale? Are you using the nominal scale? Are you using the ratio scale, or what scale? So all the four scales, the understanding of the four scales is very important. So now the next important thing is, so after understanding that objectives are important, objectives are important, so now the next important thing is, so after understanding that objectives are important, you also need to know which scale and Sir, madam is measurement not am I audible. using. Yes, sir. We have to wait. I There think is a it's network. network issue, I think. Yes, yes. There is a network issue. So can I ask a doubt? Hello, Yeah, yeah, yeah. You can ask. sir. What is the I'm not getting the meaning of nominal, ordinal, and ratio scale, sir. Yes, ma'am. Already, is our nominal and ordinal scale. No, already Dr. Mullah sir has taken one session. Okay. After this session, madam will definitely guide you to ask this question. Yeah. Yes, yes, sir.
Ma'am, Hello. please. Ha, Oh yes. my God. Yeah, I'm having a terrible time today, but now I've come out of my house because I have no other option. So I'll just give a try and do it a little faster Yes, ma'am. Okay. because there's a. So then I was just coming back again to the next one is that the contents of questionnaire is very, very important. So one needs to know what exactly should be the contents in your questionnaire. So remember few things. First one is your sequencing of questions. Start from something very simple to the complexities. Like start on a very simple note and then go for it. Should have sections, and it should be such that it will be helpful you in tabulating and analyzing. So always very important that you use different formats. There are different formats you have a combination of all the types. You use an open ended questionnaire also, you use a close ended questionnaire also, you use a Likert scale based one, you use a ranking. So all should be used. You cannot have the same kind of an format of a questionnaire. So it's very important that you should go from general to specific. That is very important when you are actually thinking about a questionnaire. Now the next important thing is that your questions should be such, it should be designed in such a way that they are understandable, they are clear, they are comprehensive, and they actually, if they should actually evoke a response. Like your questions should be such that should help the question that the respondent answer it. So you should not drive them crazy, you should not drive them mad or something. They should not get irritated with your questionnaire, but you should make the questions appear in such a way that they should be able to answer your questions, should be able, you should be able to lead them in such a way that they would be coming, I mean, give an answer to your question. So actively participate in the questionnaire is what questionnaire should actually bring the respondent to. So that should, so the respondent should, when he looks at the questionnaire, he starts feeling, wow, nice question for me to answer. So I can answer this. This is very much within it. I mean, as a respondent, I can very much do it. This kind of an attempt should be there, and that is how the questions should appear. Very clear that sometimes even if you're not existing, that's why now when you're doing something on online questionnaire, you're not there sitting there telling them why this question was put. So this question has to be made clear immediately by reading there. Unlike what we used to do before, suppose if I would have taken a questionnaire to somebody and I'm just sitting across and he's trying to fill it, if he has a doubt, he could come back and ask me, what is the question, why is it put here? Online questionnaires, you don't have that scope. So you have to be very clear with your questioning, your language, how are you putting it, and all that. So it has to motivating the respondents and helping them understand the questions and making them answer is an art which comes out from that questionnaire. It is an art of the researcher, and that is why even an well placed or well experienced researcher will find very difficult to get that kind of a question. But nevertheless, this art can be mastered, and जैसे तुम करते जाते हो वैसे ही इसका experience से बढ़ जाता है, like your exposure gets better. So there are formats of questionnaires, or there are different types of questionnaires. Some questionnaires are open ended, some questionnaires are close ended. Open ended का मतलब यही है कि तुम एक क्वेश्चन देते हो, एंड जैसे मैंने पूछा, why do you think Maggi noodles are liked by children? So मैंने एक सिर्फ क्वेश्चन पूछा, why do you think Maggi noodles are liked by children? और मैंने किसी से पूछा, स्टेट योर ओपिनियन अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन, और मैंने उनको फ्री एक्सेस दे दिया। मैंने उनको वो एक्सेस दे दिया कि अभी तुम तुम्हारा आंसर करो कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, और तुम उनको एक 4-5 सेंटेंसेस देते हो। सो जब ओपिनियन सीख करना है या क्या करना है, तो ये जब ओपन उनको हम एक एक्सेस देते हैं जहाँ पे उनको फ्रीडम होता है उनका एक्सप्रेशंस, उनके व्यूज, उनके आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए, where the respondent is free to express his views, his ideas in a very free manner, then
those are called as an open-ended questions. Now, of course, all the questions in the questionnaire cannot be open-ended questions. Normally, this kind of a questions will come only at the end of the questionnaire. So, but certain times, even from the start, also you can ask, but it depends upon what are you doing. Again, तुम्हारे objectives और तुम्हारे variables क्या है, because open-ended में quantify करने के लिए difficult हो जाता है, because तुम एक question पूछोगे, what do you think about, जैसे अभी मैंने ये question बोला था कि what do you think about Maggi noodles, are they liked by children or not, और 4 sentences दिया, तो आप काफी कुछ लिख सकते हैं, या the noodle shape और the noodle color, free access है, इसको मेरे को quantify करने के लिए difficult हो जाएगा. So you cannot have all questions of open ended, but yes, respondents are free to express his views and ideas. Then yeah, like this particular open-ended question is merely to raise an issue or to understand what the respondent feels about it, and this type of questions have to be predetermined. You cannot just ask them at the last moment and try to seek an information. पहले ही सोच समझ के ये क्वेश्चंस को रखना पड़ेगा, उनका ऑर्डर रखना पड़ेगा और ऑर्डर को डिटरमाइन करना पड़ेगा. ये क्वेश्चंस को कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, सो इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, पर तुम्हारे फाइंडिंग्स में उसको तुम प्लेस कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस प्लेस्ड, ये कुछ आई मीन दिस इज टेकन. सो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहना भी बहुत एसेंशियल होता है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट स्टडी यू आर डूइंग. इट इज यूज्ड इन मेकिंग इंटेंसिव स्टडीज ऑफ ए लिमिटेड. सो तुम जब ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हो तो एक लिमिटेड यूज के लिए ही उसको यूज कर सकते हो, बिकॉज तुम सिर्फ उसका आई मीन एक्सप्लेनेशन के तौर पे उसको क्वालिटेटिव फॉर्म में लिख सकते हो, पर क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो. सो दैट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसका फॉर्मेट बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ये बहुत प्रोमिनेंटली सोशल साइंस में या फिर बिजनेस में या कॉमर्स के रिसर्चेस में यूज किया जाता है. ना क्लोज एंडेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इनको एक पर्टिकुलर फ्री स्ट्रक्चर नहीं होता है. इसको हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्वेश्चन को मे बी एक ऑप्शन देंगे, या फिर इस तरह से पूछेंगे, यस और नो पूछेंगे, या कैसे तो पूछेंगे जहाँ पे यू विल नॉट बी एबल टू गिव 4-5 सेंटेंसेस, बट उन 4 में से जो चॉइस दिया है उसमें से आपको एक टिक करना पड़ता है, तुमको जो बेस्ट लगता है वो ओपिनियन वहां देना पड़ता है. So the response format are structured and defined. Responses are limited, okay, to the stated alternatives, and then respondent को उसी alternatives में से अपना opinion देना पड़ेगा. अगर उस alternatives में opinion नहीं है तो कुछ और है, तो respondent कुछ नहीं कर सकता, because he has to only give his opinion from that particular alternatives given to him. So respondents have to express only in that is one of the limitation. So that is why तुमने अगर वो alternatives में वो answers डाले जो normally रिस्पोंडेंट्स रिप्लाई करनी चाहिए, मीन्स तुम्हारा क्वेश्चनर परफेक्ट हुआ है. हाँ, एंड ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तुम्हारा जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ये काफी हद तक तुम्हारे को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे हेल्प करता है. इट विल हेल्प यू इन इट विल हेल्प यू ब्रिंग आउट द स्टैटिस्टिकल वर्जन ऑफ इट. You can quantify them, you can give numbers. Sometimes some questionnaires are already pre-coded, means अगर तुमको मेल फीमेल एजुकेशनल लेवल्स या अगर प्री कोड करना है तो मेल को 1, फीमेल को 2, ट्रांसजेंडर को 3, ऐसे प्री कोड भी कर सकते हैं. ये एडवांटेज ए पर्टिकुलर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पे होते हैं. और यहाँ पे ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में तुम्हारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो काफी इजी तौर पे लिफ्ट कर सकते हैं. इट्स मोर इजियर टू लिफ्ट द वेरिएबल्स हियर, अनलाइक दैट ऑफ एन ओपन एंडेड में एक फ्री एक्सेस होती है. सो आज मेरे को ऐसा लगा, कल में कुछ और लगा, वो चांसेस है उसमें. पर क्लोज एंडेड में यू हैव अ ऑप्शन, you have to tick that option. Okay, so now so normally जब इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यू जैसा तुमको अगर इंस्ट्रूमेंट करना है तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं. अच्छा, कल के सिंपल वाला कल के एक्सीडेंट जैसा हुआ था, आपका ओपिनियन क्या है, या फिर देन क्यों बच्चे ऑनलाइन ऐसे बिहेव कर रहे हैं, जस्ट जनरल. अगर हमको इंटरव्यू करना है तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं
ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए वो बहुत हद तक इंटरव्यू मेथड्स होते हैं, ओके। पर क्लोज एंडेड के लिए बहुत बार वो क्वेश्चनर फॉर्म में होते हैं। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस में नॉर्मली यू गेट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अभी मेरे को पूछा कि व्हाई स्टूडेंट्स आर बिहेविंग लाइक दैट, अभी इवन इफ इट अ प्री स्ट्रक्चर्ड वन, तो मैं मेरा आइडिया दे दूंगी बेस्ड ऑन द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मैं टीचर हूँ और मैं फेस कर रही हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ, तो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। पर देन क्लोज एंडेड में कैसा होता है, 1-2 मिनट थिंकिंग कर सकते हो, सोच सकते हो। अगर किसी ने पूछा कि तुमने लास्ट मंथ कितना खर्च किया परफ्यूम पे, अगर मैंने खर्च किया तो मैं 2 मिनट सोचूंगी कितना खर्च किया, तो टाइम दिया जा सकता है। सो ओपिनियन सीख करने के लिए, एटीट्यूड्स समझने के लिए, प्रेफरेंसेस समझने के लिए देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल, वो यूज होता है वहां। वो इजीली तुम क्वेश्चनर से कलेक्ट कर सकते हो जो तुम इंटरव्यू से नहीं कलेक्ट कर सकते हो। तो आउटकम क्या होता है क्वेश्चनर का, कि तुमको एक क्लियर आइडिया मिलता है, रिस्पोंडेंट क्या एक्सप्रेस कर रहा है वो क्लियर हो जाता है, क्वांटिफाइबल है, और एक बार तुमने क्वेश्चनर को अच्छी तरह से ड्राफ्ट कर लिया, इजी होगा एक्सप्रेस करने को, दैट विल बिकम इजियर टू एक्सप्रेस, अनलाइक दैट ऑफ एन ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, और फिर कुछ दिनों के बाद आपको लगता है शायद मैंने वो क्वेश्चन उस तरह से नहीं पूछना चाहिए था, बिकॉज मेरे को इन्फॉर्मेशन ऐसा आया है। सो बट बोथ द क्वेश्चंस हैव टू बी यूज्ड इन द क्वेश्चनर, depending upon what your research work demands for. तो अभी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यूज करने हैं, तो कैसे क्वेश्चंस यूज करेंगे? क्लोज एंडेड के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं? तो एक क्वेश्चन का टाइप होता है, फॉर्मेट होता है, उसको बोलते हैं डाइकोटोमस। डाइकोटोमस क्वेश्चंस ये होते हैं जो सिर्फ यस और नो बताते हैं। डाइकोटोमस क्वेश्चंस में तुम्हारे को इधर यस है या फिर नो है, ये इधर फिर लाइक है या फिर डिसलाइक है, या इधर फिर सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। सो मैंने क्वेश्चन पूछा, आर यू अ डायबिटिक? तो मैं कैसे क्वेश्चन उसमें पूछ सकती हूँ, यस और नो? तो ऐसा नहीं पूछती हूँ कि व्हाट आई मीन, यू हैव टू आस्क दैट स्पेसिफिक क्वेश्चंस इन दैट फॉर्म ओनली। आर यू एजुकेटेड, इसका कोई मतलब नहीं होता है, और बिकॉज अ पर्सन हु इज रीड एंड राइट, और आर यू लिटरेट, इसका कोई मतलब नहीं होता है, बिकॉज द पर्सन हु इज एबल टू जस्ट साइन ऑल्सो इज अ लिटरेट। सो यू हैव टू नो कि कैसे क्वेश्चंस कैसे फॉर्मेट में डालें। सो ये डाइकोटोमस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्राइमरी क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट टू स्टार्ट विद द क्वेश्चनर ये क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं, जैसे डू यू वॉच टेलीविजन, यस और नो। फिर देन तुम आगे टेलीविजन के रिलेटेड क्वेश्चंस निकालो या जो भी है, जैसे वो तुम निकालो। आर यू अवेयर ऑफ दिस, लाइक यू वांट टू नो अबाउट वेदर people know about green marketing, so are you aware about green marketing, yes or no, questions like that. So वो क्वेश्चंस वहां पे यूज किया जाता है। नॉर्मली क्वेश्चनर को स्टार्ट करते समय वैसे क्वेश्चंस यूज किया जाता है, जैसे ऑयल प्राइसेस के बारे में या पेट्रोल के रेट्स के बारे में, या मुझे जानना है कंज्यूमर्स के पास से कि उनका कैसा व्यू है, तो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ ये क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पेट्रोल डू यू यूज इन योर कार, नॉर्मल और प्रीमियर? Your working hours in the organizations are fixed और flexible. So start होने के लिए ये dichotomous questions को use कर सकते हैं. Then we have an other kind of a question normally, और एक बार बताऊं, dichotomous question से पूछते हैं उसका relevance ये होता है कि इधर वो present है या present नहीं है या absent है। तो dichotomous questions को normally तुम कोड कर सकते हो 1 and 2 analysis में, so that तुम्हारे को वो easy हो जाएगा, statistically help करेगा। एंड नॉर्मली ये नॉमिनल स्केल पे होता है, बिकॉज डाइकोटोमस में तुमने पहले यस डाला और फिर नो डाला, या पहले नो डाला और यस डाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो कोडेड होते हैं। अगर तुमने यस को 1 कोड किया और वाई को 2 कोड किया है, नो को 2 कोड किया, तो अकॉर्डिंगली तुम्हारा स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन उसमें से आएगा। सो ये काफी इजी होता है कोड करने के लिए, एंड मोनोटोनिक होता है, बिकॉज ये ऐसे ही होता है, 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, इधर है या नहीं है, ऐसा है, इट इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, समथिंग लाइक दैट। तो दूसरा होता है जो इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस, जो हम काफी हद तक हमारे क्वेश्चनर्स में यूज करते हैं। लाइक मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने सपोज एक रिटेलर के पास गई और मैंने उसको पूछा, जो अभी एक्चुअली ऑर्गेनिक फूड नहीं बेच रहा है, ही इज नॉट सेलिंग ऑर्गेनिक फूड्स नाउ, बट मैं उसको जाकर
बिकॉज मैं उसको पूछूंगी कि विल यू कंसिडर सेलिंग ऑर्गेनिक food products in your stores? Will you consider selling organic food products in your stores? और उसको मैं ऑप्शंस दे सकती हूँ ना, मैं इसको क्या पूछ रही हूँ, विल यू कंसिडर सेलिंग, तो मैं ऑप्शंस पूछ सकती हूँ, डेफिनेटली नॉट इन द नेक्स्ट 1 year, definitely in the next 1 year, probably not in next 1 year, probably yes in next 1 year. ऐसे करके मैं उसके ऑप्शंस दे सकती हूँ. सो यू कुड से डेफिनेटली नॉट मीन्स, मैं अगर रिटेलर हूँ और किसी ने मेरे को आके पूछा आर यू कंसिडरिंग सेलिंग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, तो मैं उनको शायद बोल सकती हूँ ये डेफिनेटली आई एम नॉट ट्राइंग एंड प्लानिंग इन द नेक्स्ट 1 year, और मैं उसको टिक करी. सो ऐसा तुमको ऑप्शंस देना जरूरी है. तो क्लियरली वो ऑप्शंस देना है, फिर जो भी स्केल यूज करो. या फिर मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ, हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन ग्रोसरी प्रोडक्ट्स एवरेज इन 1 month? ये क्वेश्चन अगर तुमने पूछा किसी को, तो ऑप्शंस कैसे दोगे? less than 2,500, between 2,500 to 5,000, और more than 5,000. So अगर किसी कंज्यूमर, किसी रेस्पोंडेंट के पास गए और एक क्वेश्चन पूछा, तो उसके लिए आसान होगा, क्योंकि फिर वो कनेक्ट करेगा, अरे मैं तो सिर्फ 2,000 ही स्पेंड करती हूँ, तो he will take that option of less than 2,500. If he feels that it is between 2,500, he will take that option of 2,500 to 5,000. So आपको जानना है कि आप क्या पूछ रहे हो. ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया और ऑप्शंस बोले, ये इंटरवल स्केल पे है. फिर ये इंटरवल स्केल पे आप डिफरेंस कर सकते हो कि एक जन बोल रहा है 2,500, एक जन बोल रहा है 2,500 से 5,000 के बीच में, और एक जन 5,000 के ऊपर बोल रहा है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो. इंटरवैली दीज आर डिफरेंट. सो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल स्केल के. तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस तुम पूछ सकते हो कि आर यू इंटरेस्टेड इन, आई मीन सपोज अगेन द सेम थिंग क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनिक फूड स्टडी द रिटेलर हु डज नॉट स्टॉक ऑर्गेनिक फूड was given a multiple choice question like you don't currently sell organic food products because, अगर हमने उसको पूछा, हम जा रहे हैं and we ask him you do not currently sell organic food products because, तो उसको ऑप्शंस तुम दो, तुम उसको पूछो, you are not interested, it is not profitable, they don't have proper packaging, or they are not attractive, or there are no proper sales for it. So क्या होगा, जब वो उसको पूछेंगे तो वो बोलेगा अरे सेल्स ही नहीं है तो मैं क्या करूं, तो वो टिक करेगा सेल्स को. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो ये ऑप्शंस, इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस. तो इस ऑप्शंस और मल्टीपल चॉइस बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए. सो यू शुड बी एबल टू पुट देम इन अ वेरी राइट वे. सो तब चलकर रिस्पोंडेंट उसको फिर करेक्टली पिक करेगा, और वो चॉइस को टिक करेगा जो तुम्हारे डेटा असिमिलेशन के लिए हेल्पफुल होगा. फिर जब तुम्हारा डेटा कलेक्शन प्रॉपर होगा, तो ऑब्वियसली यू विल be able to compile your data and present your data and bring out your findings and prove your hypothesis in a much better way. So that's the advantage of having a right question in a right place. Then we have, so what happens with this kind of a questions is, these questions are very clear, they are exhaustive, they give a clear idea, clear picture. The respondent will come to know, अच्छा इसका ओपिनियन मेरे को ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मेरा ये आंसर है. तो नॉर्मली हम अगर अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं तो और करेक्ट उसके ऑप्शंस देंगे तो ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट उसको आंसर करेगा ही. सो थिंग्स लाइक दैट. सो दूसरी बात ये याद करना है, सी वही लैंग्वेज को पहले उल्टा और फिर टेढ़ा देके कोई फायदा नहीं है. एक क्वेश्चन सरल, स्वच्छ, सिंपल वे में पुट करो. सो जैसे मैंने अभी वो क्वेश्चन बोला था, सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, खत्म. यू आर इंटरेस्टेड बट द सेल्स आर नॉट गुड. दो क्वेश्चंस को क्लब मत करो, वहां पे क्लियर कर दो. यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, थिंग्स वेरी क्लियर, एक एक साथ में लेकर आओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर देन लिकर्ट स्केल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्केल होता है, जो स्केल प्रोबेबली 4 पॉइंट लिकर्ट स्केल होता है, 6 पॉइंट लिकर्ट स्केल होता है. ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये लिकर्ट स्केल बनवाया, जो काफी कॉमनली हमारे सोशल साइंस या बिजनेस या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में यूज किया जाता है. इसको लिकर्ट स्केल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके वर्डिंग्स बहुत टिपिकल होते हैं. जैसे उसके वर्डिंग्स होते हैं, अगर मैंने 4 पॉइंट स्केल लिया तो उसके वर्डिंग्स होंगे एक्सीलेंट, गुड,
एवरेज एंड पुअर, और फिर हम उसको मार्क देते हैं। एक्सेलेंट मीन्स 4, गुड मीन्स 3, एवरेज मीन्स 2, पुअर मीन्स 1, ऐसे करके देते हैं। उसी तरह तुम्हारे को लिकर्ट स्केल, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल बहुत कॉमन होता है, जो वी ऑल नो अबाउट इट। सो वैसा ही 6 पॉइंट लिकर्ट स्केल भी हो सकता है, जहां पे तुम लोग बोल सकते हो स्लाइटली इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, फेयरली इंपॉर्टेंट, नो ओपिनियन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, समथिंग लाइक दैट। या फिर देन तुम्हारे को नॉर्मली लिकर्ट स्केल इस तरह से जाता है, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, समवॉट एग्री, समवॉट डिसएग्री, agree, strongly agree, ऐसा। So normally it is agree and disagree, agree at one end and disagree at another end। फिर तुम agree को strongly agree को 5 करो, strongly agree को 1 करो, वो तुम्हारे पे होता है। तुम जब tabulate करोगे उसको ध्यान रखना कि कैसे कर रहे हो। अगर तुमने बोला, अगर तुमने क्वेश्चन पूछा और तुमने strongly agree को 1 दिया, तो तुम लोग को strongly agree 1 को ही लेना है, that means it is on a scale of 1। अगर तुमने स्ट्रांगली एग्री को 5 लिया है तो 5 को ऐड करना है, वो ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हारे को जब तुम वो लिकर्ट स्केल करते हो। बिकॉज एक प्रॉब्लम हो सकता है लिकर्ट स्केल में, इज दैट पॉजिटिव क्वेश्चंस और नेगेटिव क्वेश्चन। जैसे तुम अभी इवेल्युएट करना चाह रहे हो कि मेरा टीचिंग कैसा है या मैं कैसे पढ़ाती हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ जो पॉजिटिव स्केल पे हो सकता है, दैट नोज द सब्जेक्ट वेल। और मैंने स्ट्रांगली एग्री को 5 पॉइंट्स दिए, एग्री को 4 पॉइंट्स दिए, अनसर्टन को 3 पॉइंट्स दिए, डिसएग्री को 2 पॉइंट्स दिए, और स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 दिया मेरे स्केल पे। पर मैं एक ये पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया, सो मैंने वहां पे दिया। पर अगर एक नेगेटिव क्वेश्चन है कि शी इज नॉट इज अनएंथुसियास्टिक अबाउट टीचिंग, और अगर मेरे पास है व्यू लेना है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि तुम उस स्केल को किस तरह से यूज कर रहे हो। तो इस मामले में इट्स बेटर दैट स्ट्रांगली एग्री 1 होगा और टोटली डिसएग्री 5 होगा, बिकॉज तुम वो तुम टोटली डिसएग्री कर, अगर तुम स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हो कि वो अच्छी, आई मीन यू, इफ यू आर डिसएग्रीइंग दैट शी इज नॉट अ वेरी एंथुसियास्टिक वन, दैट मीन्स शी इज एंथुसियास्टिक। सो वैसा तुम्हारे को ये अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी में लाना पड़ेगा। सो यू हैव टू नो अबाउट विच इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, विच इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। सो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और अगर 5 को तुमने स्ट्रांगली एग्री किया, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है और तुम पूछ रहे इज अनएंथुसियास्टिक अबाउट टीचिंग एंड यू फील दैट शी इज एंथुसियास्टिक, देन स्ट्रांगली एग्री में तुम्हारे को कम देना है, 1 मार्क ही देना है, और स्ट्रांगली डिसएग्री में 5 पॉइंट्स देना है, बिकॉज यू आर नॉट एग्रीइंग दैट शी इज एन अनएंथुसियास्टिक टीचर। सो ये शायद आपको अगर मेरा स्लाइड दिखता तो और आसानी से समझ आता। आई एम जस्ट होपिंग कि तुम उसको समझे। तो इसी तरह यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो यहाँ पे तुम उसको 5 पॉइंट्स डिसएग्री पे दे रहे हो, बिकॉज वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, इज अनएंथुसियास्टिक अबाउट टीचिंग। सो ये याद रखना बहुत जरूरी है। पर कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स हो जाते हैं कि बहुत पॉजिटिव भी है और बहुत नेगेटिव भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट्स और नॉट लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट्स। ऐसे स्टेटमेंट्स काफी हद तक अवॉइड करो, बिकॉज ये फिर समझ नहीं आएगा तुम कौन से स्केल पे यूज करेंगे, 1 to 5 पे यूज करेंगे या 5 to 1 पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे अगर तुम स्ट्रांगली डिसएग्री 5 भी बोलते हो तो इट गिव यू अ वेरी नॉट अ राइट पिक्चर। सो इसको अवॉइड करना जरूरी है। सो लिकर्ट स्केल को यूज करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेस होता है क्वेश्चनर्स में। यू हैव टू राइटली यूज एंड यू हैव टू पुट द क्वेश्चंस इन अ राइटर पर्सपेक्टिव। और सब लिकर्ट स्केल क्वेश्चंस तुम क्लब कर सकते हो और एक साथ पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर ऐसा नहीं करना है। अगर तुम वो लिकर्ट स्केल और वही स्केल पे तुम यूज कर रहे हो, समथिंग ऑन इम्पोर्टेंट यू आर यूजिंग, सो ऑल इम्पोर्टेंट यू पुट देयर ओनली। एक टेबल बनाओ, क्वेश्चंस डालो, वही स्केल पे डालो। सो बी वेरी केयरफुल वेदर यू हाउ यू आर डूइंग इट। सो अगर तुम सेटिस्फैक्शन पे कर रहे हो तो ऑल द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सेटिस्फैक्शन एक में क्लब करो। सो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ये बहुत इजी हो जाएगा कंपाइलेशन के लिए। तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसको बोलते हैं रैंकिंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चनर्स में यूज करते हैं। जहाँ पे अगर तुमने कल सपोज रेस्टोरेंट्स पे कहाँ पे गए और तुम्हारे को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि प्लीज रैंक द रेस्टोरेंट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5, जहाँ पे तुम उनको फिर फैक्टर्स दे दोगे। एम्बियंस है, फूड क्वालिटी है, मेनू है, सर्विस है, लोकेशन है। तो तुमको लगता है एम्बियंस वाज वेरी गुड, तो तुमने उसको फर्स्ट रैंक कर दिया। तुमको लगा सर्विस इज 4,
तो तुमने सर्विस को 4 दे दिया। तो रैंकिंग क्वेश्चंस आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तुम्हारा अगर स्टडी ऐसा है जहां तुम्हारे को रैंक से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो तुम कई बार प्रेफरेंसेस जो होता है या फिर सेटिस्फैक्शन लेवल होते हैं या फिर ओपिनियंस होते हैं, ये भी सब यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द रैंक्स। यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जहां पे तुम उसको लिखना पड़ेगा क्लियरली, दिस रैंक क्वेश्चंस प्लीज रैंक ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5, 1 being the best, 5 being the least, and then you can ask your questions. इस तरह रैंकिंग क्वेश्चंस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर दूसरा एक पॉइंट ऐसा होता है कि तुम्हारे वर्डिंग्स और फ्रेजेस और तुम्हारा मैनर और तुम जो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको एक मीनिंगफुल वे में उसको प्रेजेंट करना। तो अभी मैं कुछ तुमको क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, वर्डिंग का बताऊंगी। सो जब भी तुम क्वेश्चनर यूज करते हो तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि who on whom are you using the questionnaire, for what are you using the questionnaire, when are you using the questionnaire, where are you using the questionnaire, why are you using the questionnaire, and how are you using is very very important. मैं एक बार फिर repeat करती हूँ। Who, what, when, so W's, all W's. So who, what, when, where, why, how is very important when you are thinking about it. Now अभी मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्वेश्चन बताती हूँ, एक इनकरेक्ट क्वेश्चन और एक करेक्ट क्वेश्चन, ऐसे मैं बताती हूँ। नाउ विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? अगर किसी को पूछा, अभी मेरे को पूछा सपोज किसी ने ये क्वेश्चन, तो मैं 4 न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक सकाळ और मे बी इकोनॉमिक टाइम्स। तो और कौन से वक्त मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ, मैं रात में भी पढ़ सकती हूँ, दोपहर में भी पढ़ सकती हूँ, शाम में भी पढ़ सकती हूँ, मैं बहुत सारे लोग रात में पढ़ते हैं। सो ऐसा क्वेश्चन पूछना, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, ये सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन हो गया जहां पे तुम्हारे को सिर्फ कुछ तो मिलेगा, पर वो क्वेश्चन अगर मेरे को जानना है कि ये सकाळ क्यों पढ़ रहा है या फिर ये ईटी क्यों पढ़ रहा है, तो उस क्वेश्चन से तुमको रिवील नहीं होगा। So, which newspaper do you read is an incorrect way because you don't know at what time is he reading or where is he reading. Sometimes, people commute from Mumbai to Pune and then they read the newspaper in the train. And that's a very important time for them, right? So, ये things, ये गलत होगा. So, correct answer, correct question कैसे पूछना चाहिए? Which newspaper or newspapers did you personally read at home? अगर तुमको घर में ही चाहिए during the past 1 week or past 1 month. So, or in your place. So, उसको specify करो. So, यहाँ पे क्या हो रहा है? Newspaper, newspapers. Personally, at home, place भी आ रहा है. So this is the correct way of putting it, because most of the time बहुत सारे people academicians like you and me, they all actually read more than one paper, or you could put the question in another manner इस तरह, in case if you are reading more than one newspaper, please list the papers you read. ऐसा तुम उसको क्वेश्चन डाल सकते हो। सो प्लीज लिस्ट द पेपर्स यू रीड, तो 1 2 3 4 ऐसा तुम उधर ला सकते हो। सो देन नाउ टर्मिनोलॉजी यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू नीड टू यूज अ राइट टर्मिनोलॉजी, सिंपल लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल है, जो कंफ्यूजिंग नहीं है। अभी मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ। डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मदर डेयरी आइसक्रीम इज एडिक्वेट? ये रॉन्ग क्वेश्चन है। क्या पूछा है? मदर डेयरी का तुमको अगर लॉजिस्टिक्स भी पता करना है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फाइंड आउट करने के लिए करेक्ट नहीं होगा, तुमने उसको राइटली प्लेस नहीं किया है। डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मदर डेयरी आइसक्रीम इज इनएडिक्वेट? तुम नहीं बता पाओगे एज अ रिस्पोंडेंट, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक मदर डेयरी इज रेडीली अवेलेबल व्हेन यू वांट टू बाय इट? सो तुमने ये क्वेश्चन पूछ के करेक्ट रिस्पॉन्स आएगा, फिर उससे पता चल जाएगा कि उसके लॉजिस्टिक्स अच्छे हैं या नहीं, वो रेडीली अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ से तुम्हारे को इंफॉर्मेशन काफी इजीली मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड यू गो टू टाउन? दिस इज समथिंग क्वेश्चन, मैं कल भी गई थी, परसों भी गई थी, ऐसा नहीं। व्हेन डिड यू लास्ट विजिट योर टाउन? फिर इजीली रिलेट होगा, तो बोलेगा लास्ट वीक, 15 days before, last month, a year back.
ऑप्शंस दे दो, टिक हो जाएगा। सो इस तरह से तुम्हारे को टर्मिनोलॉजी तुम यूज कर रहे हो उसको भी प्रॉपरली यूज करना जरूरी है। हमेशा एम्बिग्युइटी निकालना चाहिए, यू शुड रिमूव द एम्बिग्युइटी, क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन बताती हूँ, हाउ ऑफन डू यू विजिट पिज्जा हट, ये बहुत बार होता है, काफी क्वेश्चंस में ऐसा आता है। क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू विजिट पिज्जा हट, और ऑप्शंस दिए नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन और रेगुलर। तो मेरे लिए अगर रेगुलर है तो किसी के लिए नेवर हो सकता है। तो तुम एक क्वेश्चन में वो सब डालोगे तो तुमको रेस्पॉन्स कैसे मिलेगा, ठीक से नहीं मिलेगा। सो यू शुड बी एबल टू पुट इट इन अ वेरी क्लियर फॉर्म। जैसे तुम उस क्वेश्चन को, ये काफी एम्बिग्यूअस क्वेश्चन हो गया, क्लैरिटी नहीं है उसमें। सो उस क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से डालें, इन अ मंथ हाउ ऑफन डू यू विजिट पिज्जा हट, लेस देन वंस, 1 or 2 times, 3 or 4 times, मोर देन 4 times, ये करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग होगा। फिर मैं जाती नहीं हूं तो लेस देन वंस, टिक मारा। so you will be able to quantify it better way। so ये questions ऐसे हैं। so certain times कुछ कुछ questions ऐसे होते हैं, जैसे sex पे questions हो, या smoking पे questions हो, या dowry पे questions हो, ये सारे questions हम ऐसे directly नहीं पूछ सकते हैं, या पूछना गलत होता है, because we have no right to hurt somebody's feeling, so we have to put them in a very right way। so कुछ कुछ questions ऐसे होते हैं जहाँ पे काफी बार ऐसा होता है कि जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन बोलती हूँ, हैव यू एवर चीटेड ऑन योर स्पाउस, ऐसा नहीं पूछ सकते हैं, ये काफी पर्सनल क्वेश्चन है, ऐसा पूछना गलत है। रादर देन दैट वी कुड जस्ट आस्क अ क्वेश्चन सेइंग दैट डू यू थिंक मोस्ट पीपल यूजुअली चीट ऑन देयर स्पाउस। मैं तुमको बोल रही हूँ कुछ हद तक ऐसा हो सकता है, एंड यू हैव टू आस्क, तो तुमको ऐसे इंटेलिजेंट वे में उसको रखना पड़ेगा। सो डाउरी का क्वेश्चन है, सपोज विल यू टेक डाउरी व्हेन यू गेट मैरिड, ये गलत है, ऐसा नहीं पूछने का क्वेश्चन, ये एकदम इन डायरेक्ट वे में उसको हिट करेगा रेस्पोंडेंट को। उससे ज्यादा बेटर है अगर तुम ऐसे क्वेश्चन डालो, डू यू थिंक मोस्ट इंडियन men would like to take dowry when they get married, and put some options and whatever अगर तुमको चाहिए। सो इस तरह से किसी को तुम हर्ट नहीं कर सकते हो। जैसे इवन वर्किंग मदर है, मैं वर्किंग मदर हूँ, पर मैं उनको मेरे को अगर किसी ने आके पूछा, डू यू थिंक दैट वर्किंग मदर्स शुड बाय रेडी टू ईट फूड व्हेन दैट माइट कंटेन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, हाँ मैं जानती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बच्चे को कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं खिला सकती हूँ ना, हाँ मैं बिजी हूँ, मेरे को शायद रेडीमेड मसाला चाहिए, मैं बिजी हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे बच्चों को प्रिजर्वेटिव्स खिला के बड़ा करूं, राइट। तो उसको इंटेलिजेंटली एंड राइट वे में, सो अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। So, do you think that working mothers should buy ready-made foods? Should buy? Yes, no, don't know. Options ले लो। इस तरह से you try your best to do it। So double barrel questions पूछना गलत है। You can't ask that how was the food? Was the food tasty and spicy? Tasty also and spicy also? Both the things? You cannot। Or do you think Nokia and Samsung have a wide variety of touch phones? दोनों भी पूछ रहे हो, अरे मैं किसके बारे में आंसर दूं, नोकिया के आंसर दूं क्या सैमसंग का आंसर दूं। So you could rather ask like this, which brand has a wide variety of touch phones, Nokia, Samsung or both? फिर तुम्हारा response better way में आएगा। So that's what about a questionnaire is। So you have to be very clear with how are you structuring your questions, how are you putting your questions, so always start with an introduction, then have an open-ended question, then go into the study questions, make segregations, classify the questions, and always there is something called as an pilot testing। You should always test and do the pilot testing of your questionnaires, because your questionnaires validity, your questionnaires reliability is very important। So there is something called as an face validity and content validity। मीन्स तुम्हारे क्वेश्चंस में से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स को मैच हो रहा है या नहीं, ये कंटेंट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी बोलते हैं, जहां तुमको आई मीन एज अ रिसर्चर तुमको प्लेस करना पड़ता है। सो यू हैव ऑल दिस टेस्ट टू बी डन। सो अगर जो भी स्टडी हो, वो स्टडी में ये पूरे थिंग्स
रखना बहुत बहुत एसेंशियल है, और ये सेक्शंस में लाना बहुत एसेंशियल है। जो मैं आपको बता रही थी, मैं अभी ओरली बताऊं, मेरे पास एक्चुअली एक एक्सरसाइज भी था, बट अनफॉर्चुनेटली आज पूरा ये खराब हो गया मेरा इंटरनेट का ये थिंग्स एंड ऑल। बट जैसे अभी मैं कोई एक सैम्पल क्वेश्चन है जहाँ पे कोई पर्सन फाइंड आउट कर रहा है क्वेश्चंस अबाउट how to actually use the IT processes, or the influence of internet on business to business buying processes for IT organizations in India. तो ये उनका टाइटल है, टू द इन्फ्लुएंस टू स्टडी, वो स्टडी कर रहे हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट, the influence of internet on business to business buying process for IT organizations in India. तो इसमें कैसे आएंगे पार्ट्स, कैसे आएंगे? तो फर्स्ट पार्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड. सो विच टाइप ऑफ IT यूज, IT इंडस्ट्री योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिव, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, टेलीकॉम में, सर्विसेज में, अदर्स में. सो कितने एम्प्लॉयज है? सो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड पार्ट 1, ऐसे करके पार्ट करो. सो ऑर्गेनाइजेशंस में कितने एम्प्लॉयज है, वो वाला. देन तुम्हारा टोटल टर्नओवर कितने हैं, वो एक पॉइंट है. देन व्हाट आर योर मेजर प्रोडक्ट्स, वो है. योर एनुअल सेल्स रेवेन्यू लेस देन 1 लाख, 1 to 5 lakhs, 5 to 25 lakhs, 25 to 100 lakh, जैसे भी है तुम उसको प्लेस करो. सो इस तरह से ऑल रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एक सेक्शन में आएगा. दूसरा सेक्शन में भी होगा बाइंग रिलेटेड. So you ask all the questions relating to buying related. अगर तुम्हारे questions लिकर्ट स्केल पे है तो वो स्केल वही यूज करो, और ऑल सिमिलर क्वेश्चंस तुम उस सिमिलर इसमें डालो. रैंकिंग के यूज कर रहे हो तो उसमें सेग्रीगेशंस में बता रही हूँ. सो सेकंड वाला बाइंग रिलेटेड होगा, थर्ड वाला इंटरनेट रिलेटेड होगा, ऐसे करके. फोर्थ वाला अगर तुमको लेना है तो तुम डेमोग्राफिक्स ले सकते हो. डेमोग्राफिक्स मीन्स तुम्हारा एज क्या है, तुम्हारे जेंडर क्या है, तुम्हारा एरिया क्या है, तो कहाँ के बिलोंग करते हो, एंड तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है, ये सारे. सो कई बार तुम लोग तुम्हारा इंट्रोडक्शन करके पहले तुम डेमोग्राफिक सेक्शन 1 यूज कर सकते हो, और तुम्हारा जो भी स्टडी है उस स्टडी में से तुम डिफरेंट डिफरेंट उसके सेक्शंस करके हर सेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन सेपरेटली निकाल के लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक जगह डालोगे और राइट क्वेश्चंस लिफ्ट करोगे, तो तुम्हारा क्वेश्चन फुल प्रूफ होगा, और तुम्हारा क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग को जाएगा. और वहाँ टेस्टिंग में पायलट टेस्टिंग करोगे आप, और पायलट टेस्टिंग में अगर बिफोर इवन यू डू द पायलट टेस्टिंग, तुमको हमेशा तुम्हारा क्वेश्चनेयर को फुल प्रूफ रीड करना पड़ेगा, प्रूफ रीडिंग करना पड़ेगा. उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स है क्या नहीं वो चेक करना पड़ेगा. अगेन उसका रिलेवेंस चेक करना पड़ेगा, एरर फ्री है क्या नहीं, फ्लॉज है क्या नहीं. फिर किसी और को दिखा के चेक कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारा गाइड ही नहीं, कोई भी तुम्हारा क्वेश्चनेयर चेक कर सकता है. रिसर्च वर्क ऐसा है कि जो तुम कर रहे हो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द साइंस है, मैं कॉमर्स हूँ, साइंस हूँ, आर्ट्स हूँ, नहीं. कॉमर्स वाला साइंस को दिखा सकता है और उसको लिंक होना चाहिए. अगर उसको लिंक हो गया मीन्स यू हैव डन द राइट जॉब. मीन्स कोई भी लेमैन को वो समझ आना चाहिए. So you have to check all this, and then you have to proofread it, check the relevance, do the pilot testing. Pilot testing करने के बाद जो तुम्हारा क्वेश्चनर जाता है, सो कई एक्सपर्ट्स उसमें करेक्शंस लाते हैं. सो तुम्हारे को वहां पे तुम्हारा वो वैलिडिटी, लॉशे, रिलायबिलिटी मेथड तुम यूज कर सकते हो. पांच एक्सपर्ट्स के पास से तुम क्वेश्चनर चेक करवा के वो करेक्शंस लेकर आना. वो टेस्ट है एक, वो दिखा सकते हो लॉशे, रिलायबिलिटी एंड तुम्हारा रिलायबल है क्या नहीं क्वेश्चंस, वो कर सकते हो. ये करने के बाद तुम्हारा क्वेश्चनर फुल प्रूफ होता है, जहां पे तुम बिंदास जाकर डेटा कलेक्ट कर सकते हो, और ये डेटा फुल प्रूफ होगा, एक्सीलेंट होगा, तुम्हारे एनालिसिस के लिए एकदम एब्सोल्युटली फिट होगा. Okay, so that's all from me. I'm sorry, I just couldn't connect myself, and I couldn't show you my PowerPoint. I can give it, but I don't know if you have an. I just hope you have understood what I tried to Yes, say. ma'am. No issue. No issue, ma'am. We So understood. in case if somebody has any question, you can always ask me. Yes, ma'am. Some participants have questions. Good evening, madam. Yes, sir. Sir. Vijay. Many respondents filled the questionnaire without interest.
So they selected the options randomly. As a Hmm. result, we got unrelevant, unreliable data. How can Absolutely. we solve this problem? That's what I said. You should be able to ask the questions in such a way that you will evoke the respondent's interest. उसका क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए और ऑप्शंस इतने क्लियर होने चाहिए कि उसको दूसरा चांस ही नहीं मिलना चाहिए. वो क्लैरिटी तुम्हारे क्वेश्चनर में तुमको खुद लाना है. तो वो अगर तुम नहीं लाए मीन्स तुम्हारा क्वेश्चनर ठीक से क्वेश्चंस तुम फॉर्म नहीं कर पा रहे हो. यू गेटिंग मी? वो अगर नहीं रिस्पॉन्ड दे रहे मीन्स तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया है. अगर तुम्हारे को वहां पे क्वेश्चन पूछना है डू यू लाइक, डू यू डोंट लाइक, सो तुम्हारा प्रेफरेंस का क्वेश्चन पूछ के नहीं होगा ना. डू यू प्रेफर? अगर तुमको प्रेफरेंस का ही क्वेश्चन पूछ रहे हो और प्रेफरेंस में तुम दे रहे हो या रैंकिंग का पूछ रहे हो तो उसमें यस नो दे के गलत होगा ना. तो you should put your questions in a very simple, easy language so that the respondent understands it, your intention of asking that question. और वो क्वेश्चन इतना उसको उसको डोके दुखी नहीं देना है. आपका आपका क्लैरिटी, उसको क्लैरिटी में वो क्वेश्चन अगर पूछेंगे, उसको अगर तुम ऐसे क्वेश्चन पूछो कि मैं क्या आंसर दूं उस पे, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा. उसको तुम जब क्वेश्चंस बनाओगे तो वो क्वेश्चन में इतना सिंपल क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारी तरफ से. भले ही आप 4 क्वेश्चन पूछो उसमें, पर वो उसको टिक करे, यस करे, नो करे या रैंक दे दे या फिर उसका प्रेफरेंस दे दे या इंपॉर्टेंस बताइए, जो भी है. अगर आपको ऐसे रिस्पॉन्स आया मीन्स यू हैव टू सिट बैक एंड थिंक अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देखो और देखो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. 100% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और जो क्वेश्चंस आपने पूछा बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग होगा तो कोई रिस्पॉन्डेंट आंसर नहीं दे पाएगा. सो अगर आपने उनको क्लैरिटी दिया और कंफ्यूजन कम किया तो शायद बेटर होगा. तभी कोई भी क्वेश्चनर रिस्पोंडेंट्स नहीं आंसर करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता. Thank you, Thank you. madam. Thank Yeah. you. Any question? Kartamal ma'am. May I, sir? Hello. Yes, ma'am. Hello. Yes. Ma'am, first of all, I very thanks to you because even not supportive of any technical, you came out from your house and even you are explaining to us. So very much thanks to you. And ma'am, my question is that how many questions we should ask standardly मैम in our research? मैम ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है. मैंने आपको पहले शायद बोला भी 10 क्वेश्चन मैंने 50 क्वेश्चन पूछे, कितना अच्छा किया, ऐसा नहीं होता है मैम. Standard format, standard or number has got no relevance. Something which covers your objectives, something which is getting an information from your, what your research work is for, something which is collecting that kind of an information which you are able to collect the data from your questionnaire is the most relevant one. So it has got nothing to do with the number. It is more important whether the information is gathered, whether the data is getting gathered from that questions what I'm asking. So again, very important, sit back, look at your objectives, look at your variables, look at the scale you want to use it. And once you have a clarity in that, you should be asking only the questions relevant to that. So there is nothing like a number. As a research guide, I would never suggest that 20 क्वेश्चन पूछो, 40 क्वेश्चन पूछो, नहीं. Something which is covering your objectives, something which your richer work demands, you should be able to do it. Okay? Okay, ma'am. Yes. Anyone? Hello, madam. Yes, sir. Answer Hello. हाँ बोलिए ना. हाँ, अच्छा, अभी अपन 100 आदमी को क्वेश्चनर भेजा है. अच्छा. तो कितना रिस्पांस आए तो सक्सेसफुल हुआ ऐसा समझने का. यदि 20 लोगों ने दिया है तो अपना क्वेश्चनर सक्सेसफुल हुआ है, वो अपन प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, कब समझने का अपन को? सर क्वेश्चनर का अगर हमको वैलिडिटी, नॉर्मली क्या होता है जब हम सैंपल करते हैं ना, सैंपल में हमेशा हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके, सैंपल अभी मैं नहीं सिखा रही हूँ, बट वी ऑलवेज टेक अ बफर.
थोड़ा बफर लेते हैं। तो अगर तुम्हारे को 100 क्वेश्चनेयर्स में अगर सिर्फ 20 का आया है, मीन्स तुम्हारा डेटा वैलिड नहीं हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। ओके मैडम, तो फिर और वैलिड फ्रेश नहीं। क्वेश्चनरी अपन यूज कर सकते हैं, उसमें हाँ रिवाइज करके, हाँ, तो उसमें और इसलिए रिवाइज करके अपन फिर यूज कर सकते हैं फ्रेश तो वो, क्वेश्चनरी। यस एब्सोल्युटली, वही तो मैं बता रही थी, पायलट टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। लॉशिया मेथड जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बताता है वो बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है, जब आप 5 एक्सपर्ट्स को देते हो तो 5 एक्सपर्ट्स आपको करेक्शन करके देंगे कि ये क्वेश्चन ठीक से पूछा नहीं है, ये क्वेश्चन क्लैरिटी में, ये आपका इंटेंशन नहीं समझ रहा है इस क्वेश्चन से। सो इस क्वेश्चन को चेंज करो, इस क्वेश्चन का मॉड्यूल चेंज करो, इस क्वेश्चन के अल्टरनेटिव चेंज करो। कभी कभी क्या हो जाता है, सेम अल्टरनेटिव्स हम यूज कर लेते हैं दो क्वेश्चंस को, बल्कि दूसरे अल्टरनेटिव्स रहने चाहिए होते हैं। तो ये सारे करेक्शंस तुमको करना है। अगर क्वेश्चनर का रिस्पॉन्स 20 आया है, मीन्स 100% यू हैव टू रीमॉड्यूल, री assess and go for your questionnaire again, make corrections over it and again present it. यस मैडम, तो पहले ही कुछ एक्सपर्ट को लेके क्वेश्चन फाइनल करने के बाद ही एक्चुअली भेज देना चाहिए। थैंक यू हाँ मैडम। पहले, हाँ वैलिडिटी एंड उसका करना जरूरी होता है, इसलिए पायलट टेस्टिंग ही करते हैं। ओके हाँ, कुछ लोगों आपका जो 100 में से 20 लोगों का पायलट टेस्टिंग करिए आप फर्स्ट, उनका ओके, रिस्पॉन्स भेजिए और वहां पे करेक्शन करके फिर उसको भेजिए, फिर क्वेश्चनर तैयार करिए, रिस्ट्रक्चर करिए क्वेश्चनर को। ओके मैडम, हाँ थैंक यू। या Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए। Ma'am, can I have the meaning of nominal or ordinal scale or ratio scale? हाँ सॉरी मैम, सर डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, कैन यू प्लीज रिपीट इट? यस, Can I have the meaning of nominal or ordinal scale and ma'am, ratio? these are the scales. These are the scales used in a research work. Nominal means you can use it in any way you want. Like you could, are you, what religion do you belong to? Punjabi, Hindu and things like that. तो वहां पे nominal होता है, उसमें तुम्हारे को 1 2 3 का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने 1 हिंदू रखा, 2 पारसी रखा, तीसरा सिख रखा तो भी चल जाएगा। these are the scales which are used. Actually scale पे आपका एक लेक्चर हुआ रहेगा। और ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब कोई कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में रनिंग कंपटीशन है, रनिंग में फर्स्ट वाला जो आया है सेकंड वाले के साथ में उसका डिफरेंस होता है, राइट? सो फर्स्ट वाला जो आया है वो फर्स्ट है, सेकंड वाला जो आया है वो सेकंड है। तो ये वाला एक्चुअली ऑर्डर पे है ऑर्डिनल स्केल। वैसे तुम्हारे को रेशियो स्केल्स होता है, इंटरवल स्केल्स होता है। सो यू हैव इन बेसिक इंटरवल, सो रेशियो स्केल्स होते हैं। जैसे क्लास में कोई बच्चे हैं, आपको एग्जाम लिया है तो एक बच्चा 0 अटेंड करके भी, सो दीज आर द स्केल्स मैम। ये स्केल्स का है, ये एक पूरा डिफरेंट ये है। पर देन तुम्हारे को अगर क्वेश्चन पूछना है तो तुम वैसे तुमको पूछ सकते हो। जैसे मैं अभी तुमको एक एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक इनकम पे देती हूँ। सो व्हाट इज योर इनकम, आई मीन सपोज अ क्वेश्चन है, सो हम उसको नॉमिनल स्केल पे भी पूछ सकते हो और ऑर्डिनल स्केल पे भी पूछ सकते हो। नॉमिनल स्केल पे ये पूछ सकते हो, आर यू फ्रॉम द हाई क्लास और आर यू फ्रॉम द मिडिल क्लास और आर यू फ्रॉम द लोअर क्लास। बट अगर तुम्हारे को ऑर्डिनल स्केल पे पूछना है, यू कैन पुट द थिंग दैट योर इनकम इज मे बी बिटवीन 5,000 to 10,000, 10,000 to 20,000. So this is more quantifiable. So these are the scales, these are the measurements and scales which we use in the research work actually. So Actually, that you have sir, to understand, very important when you're doing the questions कि ये क्वेश्चन में ऐसे पूछो ना। सपोज मेरे को किसी बाइंग पे करना है और मैंने मिडिल क्लास और लोअर क्लास किया तो मैं क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगी ना, आई विल नॉट बी एबल टू क्वांटिफाई दैट। सो वो इस तरह से उसको करे जहां पे वो क्वांटिफाई हो सके। सो दीज आर द स्केल्स व्हिच यू यूज। ओके, Thank you, ma'am. मॅडम ना मराठी पण येतं, मराठीत काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता। मॅडम मराठी बोलतात। मला तेलुगुही येतं, मी ते वाचते। मॅडम आमची जी संस्था आहे ती तेलुगू आहे, हो पद्मश्री मी शिक्षण संस्था। हो मी ते वाचलं म्हणून म्हणाले मी। येस मॅम, येस मॅम, थँक्यू। मैं तेलगे मैडम, तेलगे यादगिरी कोटा। Sir, ma'am, let me introduce Mana sir.
He is 72 years young researcher, ma'am. 72 Wow, years. that's great. Yes. Yeah. So my native is Hyderabad, but I was born and brought up in Pune, but I speak very good Telugu. So Yes. no Yes. problem. या मराठीमध्येही विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाहीये. Yes. 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 माळी मॅडम, तुम्हाला काय विचारायचं आहे? मॅडम, एखाद्या रायटरचं जर इंटरव्ह्यू घ्यायचा असेल, बरोबर. मग त्यांना काय असं प्रत्येक, जर त्यांनी बाहेरच्या देशात असेल किंवा हे, त्यांना प्रत्यक्षात जाऊन भेटायचं असते का ऑफिशियली म्हणजे फोनवरून सुद्धा इंटरव्ह्यू घेऊ शकतो? मॅम, इंटरव्ह्यू आपण आता मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन बोललो नाही, म्हणून ते माझा पॉइंट नव्हता. पण Yes. जर का इंटरव्ह्यू घ्यायचा असेल तर आपण तसंही घेऊ शकतो. मी तुम्हाला एक सांगते, एक हे आहे, रिसर्चर आहे फ्रान्स मधले. त्यांनी काय केलंय माहिती काम? त्यांनी आपल्या प्रधानमंत्रीचे जे मन की बात आहे ना, ते सगळे ते ऐकायचे, त्याला ट्रान्सलेट केलं आणि त्याचं इंटरप्रिटेशन केलं. तर आपल्याला तर असं काही नाहीये, देश असू दे, परदेश असू दे, जर का तिथं तुम्हाला ते इंटरव्ह्यू फोनवर घेता येईल तर फोनवर घेण्यासारखे तुम्हाला क्वेश्चन्स आहेत, आणि फोनवर जेव्हा तुम्ही त्यांना क्वेश्चन विचारता किंवा इंटरव्ह्यू करता आणि त्यांना ते ऐकून कळून ते आन्सर देऊ शकतील, मग तुम्ही फोनवरही करू शकता किंवा तुम्ही समक्ष त्यांना भेटून इंटरव्ह्यू करू शकता, की मला तुम्हाला भेटायचंय, मला तुमचं टाइम द्या, आणि तुम्ही क्वेश्चन्स करू शकता. बरोबर. कधी कधी मी तसं सांगते, कधी कधी काय होतं, मला एक रिस्पॉन्ड, म्हणजे मी डीमार्टच्या बाहेर, मला डीमार्ट मध्ये लोक का जातात हे कळायचं असेल तर मी ऍट द स्पोर ऑफ मुवमेंट त्याला बोलू शकते, तुम्ही डीमार्टला आलात, तुम्ही काय खरेदी करायला आलात हेही विचारू शकते. स्पर ऑफ द मुवमेंट. त्या मुवमेंट मध्ये माझं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेअर नसेल, म्हणजे क्वेश्चन्स माझ्या डोक्यात स्ट्रक्चर्ड नाहीयेत, हे विचारायचं असं नाहीये, मी ऍट द स्पर ऑफ द मुवमेंट माझ्या डोक्यात जे काही क्वेश्चन्स येईल ते विचारेन. पण कधी कधी आपल्या रिसर्च वर्कला स्ट्रक्चर्ड असले, म्हणजे प्री प्लॅन्ड असले, म्हणजे आधी जाणून बुजून आपण ते क्वेश्चन्स तयार केले असले तर ते अजून बरोबर होईल, कारण मग आपल्याला एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन विचारून त्याचं उत्तर मिळू शकेल. बरोबर की नाही? चालते मॅडम. हो, बरोबर आहे. या, दॅट्स हाऊ इट इज. तर आय होप आय हॅव आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. Ma'am, I had one question. Yes. We go with pilot survey or pre-testing. Okay. Then whether can we go with carrying those same respondents for our final survey also, or we need to go with taking? See, Or we should go with taking again one more questionnaire to be filled from there if there are modifications. No. The same questionnaire has to be used, ma'am. Same questionnaire. You are out. Suppose if your respondents are 400, okay, but you did a pilot test on maybe 30 people. You include that 30 in your in your final data collection also. Okay, no need to circulate again new questionnaire to them. No. If you're doing a new questionnaire, that means you're asking new questions. That means तुम कितना analysis करोगे, ये questions का analysis करोगे या वो questions का analysis करोगे? एक ही questionnaire use करना है. हाँ, एक ही है, मतलब if I'm not getting correct answer या कुछ हो गया या pilot survey में, then तो फिर आपको corrections करना ही है ना आपके questions में. Pilot survey में, हाँ, बोलिए. After correction again I need to go with taking those respondents, or I should go जिनका with हो गया, हाँ वो बात कर रहे हो. या इफ यू वांट योर ऑथेंटिक वे में अगर डेटा चाहिए, या फिर उनका वापस से आपको लेना पड़ेगा विद द राइट क्वेश्चन है, फिर तुम्हारे को डेटा में इजी हो जाएगा, डेटा कलेक्शन में तुम्हारे का एक्यूरेसी आएगा. नहीं तो फिर कुछ आधा ऐसे हो जाएगा. सो इट्स बेटर यू टेक इट अगेन. दैट इज व्हाई वी जस्ट डू अ प्री टेस्टिंग ना. Yes, ma'am. Thank you so much. Ma'am, one research scholar asked a question: what is the difference between pilot test and even case study method? Pilot test and case study is a very qualitative research. Actually, case study comes under the qualitative research design. Okay, so and when you're talking about a questionnaire is a typical quantitative research design पे आता है. जैसे when you're talking about something on a descriptive research, or maybe
explanatory research. That is what we call when we are trying to explain a scenario and something like that. That time we use more of a questionnaire. But case study comes under exploratory research, wherein you're just exploring. So there is no conclusion for it. So researcher A can bring out his own conclusion because he has explored that idea, and researcher B can do the same case study pay or some other thing. So case study becomes a part of it, and morally, in case of a case study, more than a questionnaire, an interview method works better. Thank you. Thank you. Any question? Okay. Ma'am, you satisfied every participant here. Actually, there was the network issue, but still you came out of the house and you started the session. And even there was no PPT, but you talked in a very good manner. And at last, actually, there was a conversation. It was a good, actually, conversation with the participants. So it is on the behalf of Research Promotion Committee and Internal Quality Assurance Cell and AR Burla Women's College. I extend my deeper gratitude to you. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I just hope I have fulfilled your expectation. Yes, yes, yes. Okay. Definitely, definitely. Yes, ma'am. Yeah. Thank you for giving me an Thank you. opportunity. Thank you very much, ma'am. Thank you. Bye. Thank Can you. I log off, sir? Yes, Can I ma'am. leave? Yes, ma'am. Thank you. Thank you very much. Yes.